Hello everyone, welcome to Career Launcher, and we are back with the Masterclass 2027 Logical Reasoning, and here we are going to talk about coding decoding. We have already covered one session of coding decoding. I hope you have already watched that video and you learned something new. Now this is the second session of coding decoding, and in this session we have picked up little different type of questions, and let's see what kind of questions, what different type of questions we can have and get them answered. So before we start, that CLLST Freedom Sale is live, and it is from 12th August to 16th of August, and it is just 999. It is starting from 999, and if you want to enroll, just scan the barcode and enroll. Okay, now let's start. Let's look at this question. And these kind of questions are not very generic. These are rare type of questions. We generally don't see these kind of questions in the exams. In some exams you can see these kind of questions, लेकिन आसान होते हैं. So if we are going to solve these type of questions are crazy easy. So how to solve these questions, how to get the answers of these questions, so देख लेते हैं. So now the question is saying gun is coded as 309, deer is coded as 1498, how under is coded. So basically यहाँ पे कुछ हमको दिया नहीं हुआ है कि कैसे करना है, क्या करना है. So कुछ बहुत clarity नहीं है इसमें, right? So whenever you see these kind of questions, always look for the common letter. So common letter N, N की जगह पे यहाँ पे 9 है, and see whether you have, sorry, gun and deer में कुछ common नहीं है. So इसका मतलब ये है कि G will be representing 3, U will be representing 0, D will be representing 1, and we got gun is this, deer is this. So we are getting 9 over here, we are getting so 9 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, we have GUN and then we have DEAR. तो यहाँ पे this is coded as 309 and this is 1498. So दोनों में कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है. So basically let's check whether it works out or not. So R is 8. I can say R is 8 because all the options are talking about R is 8. ठीक है. So R तो 8 होना चाहिए. Now what is E? Let's check for E. E is I would say that is 4. लेकिन 4 second place पे नहीं आ रहा है. So sorry, second last place पे यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है. ठीक है. So E more likely अपना 4 होगा. ठीक है. U की बात करें, U is going to be 0, so U is 0, so that looks only in option C, but let's check others. N is 9, so I am getting 0, 9. D is what? 1. So basically that is the answer. So generally I think there is a typing error. It shouldn't be 9. It should be some other letter. So it is a typo. But anyhow, this is how these kind of questions should be approached. ठीक है. एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा. Now let's look at this. Now it says ox is 23. ठीक है. So I am saying ox is 23. 4 is 5 to 9. 4 is 5 to 9. Now if I look at O, O is 2 here. If I look at O, O is 2 here. इसका मतलब ये जो है दोनों सेम है. ठीक है. If I look at door, so door is 0 2 to 9. इसका मतलब 2 बार O आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है. It means corresponding numbers जो हैं वो corresponding alphabets को represent कर रहे हैं. I hope I make sense. Yes, no? सबको ये बात समझ में आ रही है कि क्या बात कर रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन में every corresponding letter is representing a corresponding number. So अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई 2 3 5 2 9 0. So 0 stand for D. This is what I know. ये D है, ये 0. So 0 represents for D. मतलब ये तो चला गया, ये भी चला गया. लास्ट लेटर में D होना चाहिए.
ठीक है. नाउ टू रिप्रेजेंट्स व्हाट? टू रिप्रेजेंट्स ओ. सो यहाँ से हमको पता ही है कि टू रिप्रेजेंट्स ओ. आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी. फेयरली इजी. क्लियर है सबको कैसे करना है ये चीज? सो whenever we are going to get these kind of questions, अप्रोच यही होती है. जनरली क्या होता है कि एक पैटर्न दिया होता है, 3 वर्ड दिए हुए हैं, 4 वर्ड दिए हुए हैं, वहां अल्फाबेट के करस्पॉन्डिंग नंबर्स हमें लिखने हैं, एज 1 बीज 2. बट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट, जहां पे कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है. 2 लेटर का वर्ड है तो 2 ही अल्फाबेट्स हैं, 3 लेटर का वर्ड है तो 3 ही अल्फाबेट है, 4 लेटर का वर्ड है तो 4 ही अल्फाबेट है. तो इसका मतलब कई बार ऐसे डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस चीजें भी होती हैं, और उसके लिए आप एक बार ओवरलैपिंग वर्ड्स को देख के आप एक बार देख लीजिए. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट दिस वन. नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर. So I'll give you some time to solve this question and tell me what is the answer. इसका आंसर क्या आएगा? एक बार सॉल्व करो, एक बार देखो. करस्पॉन्डेंस, अगर हर वर्ड में करस्पॉन्डिंग चीज नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग चीज काम नहीं कर रही है. हम्म So what's the answer for this one? देखते हैं इसको. So 247 means spread red carpet. ठीक है. So 247, I am looking for dust. ठीक है. Spread a red carpet, and 256 means dust one carpet. It means 2 directly represents carpet क्योंकि दोनों में carpet common है. So 2 goes for carpet. ठीक है. Now, dust one, it means either 5 or 6 should be my answer. So 2 is eliminated, this eliminated. ठीक है. अब यहाँ पे 2, 3, 4 का मतलब रोल रेड कारपेट. अगेन 5 और 6 कहीं और आ ही नहीं रहे हैं, तो 5 और 6 तो मैं कहीं से एलिमिनेट कर ही नहीं सकता हूँ. सो इसका मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए, दैट शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. आई कैन नॉट एक्चुअली गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका आंसर आ ही नहीं सकता. अंडरस्टूड? नो? आर बी क्लियर ऑन दिस? This one. If you have any doubt, ask me. I'll respond to your doubt then and there only. Next question. अब अगर ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है. ऑप्शन में अमंग द ऑप्शंस वी डोंट हैव कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है. अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है और मुझे बहुत ही क्विकली आंसर चाहिए इसका, तो मैं बहुत क्विकली आंसर कैसे निकाल सकता हूँ इसका, ये समझते हैं. ठीक है. 256 मीन्स यू आर गुड. आई एम लुकिंग फॉर एंड. ठीक है. सो 256 है, तो 256 में से कोई भी लेटर एंड नहीं हो सकता. तो 2 इज आउट, 5 इज आउट. 637 मीन्स वी आर बैड. इस सेंटेंस में भी वर्ड कहीं भी एंड नहीं आ रहा. इसका मतलब ना तो 6 एंड हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 7 हो सकता है. मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया. आई गॉट माई आंसर, दैट इज ऑप्शन सी. मुझे निकालना ही नहीं है. एक्चुअल लेटर क्या होगा मुझे निकालना ही नहीं है. आई एलिमिनेट 3 ऑप्शंस क्विकली. गॉट इट? दिस वन.
कैन समवन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली? बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को आंसर करना है हमें. कैसे करेंगे ये देखना है, जल्दी कैसे होगा. See, very nice, Yamika. Now let's see if I am looking for 2468. So 2468 का मतलब है part. So P stands for 2. ठीक है, सेम पिछले वाला लॉजिक. So अब हमें 2 चाहिए, मतलब we are looking for P in the front. So this is ruled out. This is also ruled out. Now 2 is T. So 8 comes to be T, 8 comes out to be T. That is option C. That's it. I actually don't need to find everything out. I can directly get the answer very quickly. Okay. Now let's move on to the next one. Tell me this one. अब यहाँ पे गेम ये है कि यहाँ पे 4 लेटर 4 अल्फाबेट नहीं है. सो करस्पॉन्डिंग्स वाली जो चीज है वो वैलिड नहीं होगी. Now how I am going to approach this one? So the thing of correspondence is not valid. कि ये इसके corresponding होगा, ये उसके corresponding होगा. So whenever we see these kind of questions, we go back to our basics. So I am writing B double O K. B stands for what? 2. O stands for what? 15. O stands for what? 15. K stands for what? 11. If I add up all the numbers, what I am going to get? I am going to get 43. So basically it is simply addition of all the numbers. ठीक है. P की बात करें, so P is what? P जो है वो अपना 16 है. ठीक है. What is E? E is 5. What is N? N is 14. If I add up all the numbers, what I am going to get? 35. Answer comes out to be option D. So, जब कुछ नहीं है, we go back to basics. Got it? Again, the freedom sale is live. This one. Or, oh, this is for board plus CUET. CUET online program, that is not very expensive. So, I would suggest if you haven't joined it, then it's high time to join it. Now let's look for this one. If tower is coded as this 81, अब मेरे को बताओ. What is the answer of this one? So tower is coded as 81. What is the term for power? ठीक है. TOWER. T stands for 20. O stands for what? 15. W stands for what? 23. E stands for what? 5. R stands for 18. ठीक है. So हमारे पास ये सारे numbers हैं. If I am going to add up all the numbers, what I am going to get? 20, 20, 40, 40 and 41 comes out to be 81, and that's what it is talking about, summation of all the numbers. Now ये बोल रहा है कि टावर की जगह पावर कर दिया. ठीक है. So now I'm not going to calculate anything. I am replacing 20 and instead of that I am putting P. P is what?
16. So what is the difference we are getting? 4. It means my summation should decrease by 4. So iska matlab 81 minus 4, that comes out to be 77. So answer should be option B. Understood? Very nice. This one. Kashmir is written as this Rimshak. What is Rimshak? Again, the problem is कि एक ही वर्ड गिवन है और उस एक वर्ड से हमें निकालना है, and that word is Kashmir is a 7-letter word. The coding is also 7-letter. It means corresponding के अलावा कुछ नहीं हो सकता. Okay, now let's look at, okay Yamika, let's look at this. ठीक है. So basically 8 is here, 8 is here, 8 is not here. Okay, 2 is here, 2 is here. ठीक है. So K stands for 8. K stands for 8. So K should be 8, means I would say B and D are out. ठीक है. अब मुझे बस दो ऑप्शन चेक करने हैं. दो ऑप्शन में व्हाट आई एम गोइंग टू लुक एट. 7. K के बाद क्या आ रहा है? A आ रहा है. ठीक है. A is what? A is 1. तो 8 के पहले क्या आना चाहिए? 1. That is option A. That's it. We are done. Good to go. Let's look at this one. Again, it is a 7-letter word, 6-letter word. Coding देख लेते हैं एक बार इसकी. R stand for 4 and R is common in both. So that is 4. So basically I can say that that is a corresponding thing. ठीक है. So अब इसमें अगर देखेंगे, so R stands for 4. So this option is ruled out. This option is also ruled out. ठीक है. S stands for 9. So starting with R, ending at 9, that is option D. That's it. Only two alphabets are needed to check. Now this one.
So what is the answer of this one? Yamika is saying B. Okay. So now let's start this one. So cloud. Cloud again 5 letter word. Rain is again a 5 letter word. So in cloud and rain, is there anything common? I don't know. So आगे देखते हैं. This ends with D. This ends with D. So I am looking for a two ending with two. Every alphabet is ending at two. OU. OU is going to be 4-3. Okay. So third 4 should be 4-3. This is 4-8. So ruled out. 4-3 works fine. Ruled out, ruled out. So answer of this question is going to be option B. And this is how these type of questions should be tackled. ठीक है. I hope if you are writing any of the exams like IPMAT, I'm not talking about specifically Indore, I'm talking about JIPMAT or Rohtak. Yeah, if you are writing exams like SET, क्या कहते हैं सिम्बॉयसिस का जो एग्जाम होता है लॉ में, सो स्लैट वगैरह, स्लैट हो गया, एसईटी हो गया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ एग्जाम्स, या फिर अपना सीयूईटी हो गया, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो इसमें टाइम बच सकता है, चीजें जल्दी हो सकती हैं, तो उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में दिखेगा. ठीक है, एंड यू कैन एक्चुअली अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इफ यू आर वेरी क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच. सब निकालना नहीं है, पूरा चेक नहीं करना है, केवल ऑप्शन एलिमिनेट करना है. So I hope I helped you out a little bit. And with this, for IPMAT Test Series, it is just 999, and we also analyze all, not I won't say all the marks, but a lot of marks we analyze on Zoom for our students. We also analyze few marks on YouTube. So if you want a proper analysis, you want a good approach to attempt mocks and strategies and all, so I would say any test series would be fine and fun. And with this, let's wind up today's session. Thank you.